ओके तो हम समर 19 का मई जून 19 का 2022 पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे और हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते थे क्वेश्चन नंबर 4 and 5. So let's start with question number 4. There are many different types of aliphatic and aromatic hydrocarbons. Okay, name a naturally occurring source of aliphatic and aromatic hydrocarbons and outline how different hydrocarbons are separated from this source. Okay, so when we talk about the naturally occurring source, then that is, you all are very much well aware, that is crude oil, right? And outline the separation. So separated by fractional distillation in which molecules are separated due to different boiling points. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Now the B part. When alkanes are heated to high temperatures, in the absence of air, the molecules can break into smaller molecules, and if you recall, this is called cracking. Okay, identify the type of reaction. So it's cracking. Then write an equation which describes the reaction occurring when a heptane is heated in the absence of air to form hexane, butane, and ethene only. So see, they have given you the products as well, and you have to balance the equation after writing the reactants and products. So our reactant is heptane C7H16, then hexane, that is an alkane with a 6 carbon atom, so it must be C6H14. Then butane, another alkane with a 4 carbons, so it must be C4H10. Then ethene, an alkene with a 2 carbon, which means C2H4. Is this clear to everyone? Yes. Yes. So how many carbons are there in the product side? There are 12 carbons, and on the reactant side we have a 7 carbon. Okay, so if I make it 2, then the total carbons on the left hand side are 14, right? So I will make it to this one as well. So here I have a 14 carbons in total and 32 hydrogens. Now if we count the hydrogens, so 14 in hexane, 10 in butane, and 2 ethene, which means 8. So if we add it, I think it is also get 32, right? So now the equation is balanced as well. अगर किसी को कोई confusion है तो पूछ लें. Yes, is this clear to everyone? Yes. Okay. The equation for the complete combustion of ethene is shown.
Calculate the volume in dm cube of carbon dioxide formed in complete combustion of 1 gram of ethene at room temperature and pressure. So you have to find the volume and you are provided with the mass, right? So it means you can relate the mass of ethene with the volume of carbon dioxide. If we look in the equation, there is a 1 mole of ethene, which means what is the mass of 1 mole of ethene? That is 2 carbons, which makes it 24, and 4 hydrogens, which makes the total 28 grams. So according to the equation, if 1 mole is reacting, the 1 mole of the mass of the 1 mole is equals to its MR, which is 28. How many moles of carbon dioxide are forming? 2 moles of carbon dioxide are forming, and which means if there are 2 moles of carbon dioxide, then we know that 1 mole of a gas occupies 24 dm cube. So if there are 2 moles, then they must be occupying 48 dm cube. Is this understandable to everyone? Okay. Now they have given us the volume mass used during the reaction is 1 gram, and now you have to find the volume. So that must be x. So if I'll solve for the x, so it must be 1 multiplied by 48 and divided by 28. So can anybody solve and tell me the answer? 1.7. Okay, 1.7 decimeter cube. Is this clear to everyone? Yes, sir. अगर किसी को कोई confusion है तो please पूछ लें. Okay. Now the D part. The table compares the reactivity of alkanes and alkenes with chlorine. Okay, when alkane reacts with a chlorine, substitution occur. And in this reaction, free radicals are involved. When alkene reacts with the chlorine, substitution and addition both can occur. If the addition is taking place, then the species involved are electrophile, and if the substitution is taking place, then the species involved are free radical. Is this understandable? Yes. Okay. Now, during the first stage in the substitution reaction, chlorine forms chlorine free radicals. Okay. What is meant by the term free radical? Yes, can anybody tell me what is free radical? An atom with unpaired electrons. Okay, but it's not necessary an atom. It can be an atom or a group of atoms. So it's better to write an atom or group of atom having an unpaired electron. Is this understandable? जी ये clear है सबको? Yes. Yes, sir. Okay. Name and explain the type of bond breaking which occurs to form free radical substitution. Whenever a free radical substitution occur, the bond that is broken down in such a way that both the atoms have their own electron with them after the breaking, and that kind of breaking is called homolytic fission. And what happens in the homolytic fission? We can write that
after the breaking of bond one electron goes to each atom. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes. Name the stage of the reaction mechanism which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine free radical. Yes, when a methane reacts with a chlorine free Propagation. radical. Very good. Where what Propagation. will happen? Yes, good. When a methane reacts with a chlorine radical take a hydrogen from a methane forming a hydrogen chloride, and we are left with a CH3 free radical. So one radical is converting into another radical. That's why it is called propagation, because the radicals are propagating. Is this clear? Now complete the equation for the reaction which occurs when a methane molecule reacts with a chlorine free radical. So see here we have a chlorine free radical, as I have told you, that it takes the hydrogen from the methane molecule to form a hydrogen chloride. And we are here left with the 3 hydrogens in a molecule and an unpaired electron. So a methyl radical is formed. Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay. Carbon atoms can form a sigma and pi bonds within a hydrocarbon molecules. Explain the following statements reference to sigma and pi bond. Alkene reacts with electrophile, but alkanes do not. So uh, we can say that in alkane, all sigma bonds are present. Okay. In alkene, there is a pi bond. Okay. And then we will write that as the electrophiles reacts with alkanes, alkenes, it means that electrophiles are attracted to the electrons involved in pi bonding. Is this understandable to everyone? Yes. Yes, sir. Okay.
Now question number 5. Many naturally occurring esters are used as flavoring in food. The structure of ester V is shown. Name V. Yes, can anybody tell me the name of V? Okay. Yes, can anybody tell me the name of V? Propyl ethanoate. Very good. Very good. So see, on one side of oxygen, we have a simple hydrocarbon chain that is named as alkyl, and the carbon chain which is containing C double bond O and that is on the other side of oxygen is called alkanoate. So the alkyl chain have a 3 carbons, that's why it is called propyl, and the alkanoate chain have a 2 carbons, so that's why it is called ethanoate. Is this understandable to everyone? Yes, sir. Okay. Then we reacts with a reagent to form a salt of carboxylic acid and an alcohol. Identify the reagent that could be used in this reaction. Yes, it means first thing that ester is broken down into 2. It means they are talking about an hydrolysis, and there are 2 kinds of hydrolysis, an alkaline hydrolysis and a acidic hydrolysis. We are getting a salt of a carboxylic acid, not a carboxylic acid. So it means first the carboxylic acid will form and it reacts with the alkali, and that's why we are getting the salt of the carboxylic acid, which means that it is an alkaline hydrolysis. And in alkaline hydrolysis, we can use sodium hydroxide. Is this clear? सर दूसरा हाइड्रोलिसिस कौन सा होता है? Acidic hydrolysis होता है. We can use फिर either उसके as अंदर की sulfuric. क्या होता है? उसमें क्या यूज सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. देखें, मैं आपको बता देता हूं अगर आप लोगों को रिकॉल करना है. देखें, ईस्टर इज a molecule having C double bond O and O, and on the one side of O there must be a alkyl chain, and C double bond O के इस साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल चेन भी हो सकती है. मैं इस अल्काइल चेन को डैश से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप लोगों को दोनों बातें समझ में आ जाएं. इधर अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, मैं H पॉजिटिव वाटर लिख रहा हूँ, इसका मतलब है एसिड में हीट कर रहा हूँ. वो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है और NaOH सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है. अगर मैं अल्कली यहाँ पे लिख के वाटर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ. ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ओके. अब जरा बात गौर से सुनिएगा. जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. हाइड्रोलिसिस का मतलब है breaking of a molecule by water. So we will get one part this and the other part this. ठीक है, ये मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स बन गए. यही सेम 2 पार्ट बेसिक हाइड्रोलिसिस में भी बनेंगे. ये बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब देखें, वाटर ब्रेक होता है किसमें? H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में. तो होगा क्या कि कार्बन पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन से ब्रेक हुआ है, तो इसलिए इस कार्बन के साथ OH आके लग जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा. तो हमें क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? यस. Yes. अच्छा, यही चीज यहाँ पे भी होगी और यही दोनों बनेंगे, मगर डिफरेंस क्या है
ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, इट मींस रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है या बेसिक हाइड्रोलिसिस है, जिसका मतलब है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो बेसिक मीडियम होने की वजह से जो हमारे पास जो एसिड बना है वो एज एन एसिड नहीं रह सकता, वो बल्कि जो है उस बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे जिस भी मेटल की बेस यूज की है वो मेटल ज्वाइन हो जाएगा। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो हम यहाँ पे के लिख देंगे, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हम यहाँ पे Na पॉजिटिव लिख देंगे, और अगर उन्होंने बेस भी मेंशन नहीं की, सिर्फ अल्कलाइन मीडियम का है, तो आप सिर्फ यूं बना के छोड़ देंगे। तो इन एक्चुअल बेसिक हाइड्रोलिसिस में हमारे पास ये एसिड नहीं बनता, बल्कि जो है उसका सॉल्ट फॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है और प्रोडक्ट हमारी एसिडिक है, तो वो बेस से न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। इफ एनीबडी हैव एनी कंफ्यूजन काइंडली आस्क। नो सर। ओके, draw a displayed formula of the alcohol made during this reaction। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो देखें यहाँ पे भी यही होगा ना, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा, जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद आपके पास ये पार्ट बच रहा है, तो H इस पे लगेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो इसमें कितने कार्बन हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और उन्होंने डिस्प्लेड फार्मूला बनाने को बोला है, विच मींस द स्ट्रक्चर or the formula which shows each and every bond. So I will make a 3 carbons atom, then O, and then H, then complete the bonds of each carbon atoms with the hydrogen. So here we have a displayed formula of alcohol that is formed when the above mentioned or above drawn ester is hydrolyzed. Is this clear? यस। कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज पूछ लें। ये देखें, ये पार्ट है और इस ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, ठीक है ना? State one other possible use for V apart from the food flavoring. Esters की स्मेल अच्छी होती है तो फूड फ्लेवरिंग के अलावा इन्हें एज अ परफ्यूम भी यूज किया जाता है, और उसके अलावा जो है ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ईस्टर W is made up of 54.5% carbon, 9.1% hydrogen, and 36.4% oxygen. Calculate its empirical formula. So for empirical formula, carbon, then hydrogen, and then oxygen. We have 54.5% carbon, 9.1% hydrogen, and 36.4% oxygen. So in the first step, we divide these percentages with the AR of those elements. So can anybody tell me the answers? 54.5 divided by 12. Yes. 4.54. 4.54, 9.1, and 36.4 divided by 16. 2.275. 2.275. This is our smallest value, so we will divide all the values with 2.275. So
Here I will got 1. I think here I will got 2. And here I will get 4. Can anybody confirm this? Yes, sir. Correct. Okay. So it means the empirical formula must be C2H4O2, right? State what additional information is required to determine the molecular formula of W. So whenever we need to find the molecular formula and we are provided with the, or we have the empirical formula, then we need a relative molecular mass MR to find the molecular formula, right? Yes, till here, is everything is clear to everyone? जी ये Yes. clear है? Okay. Now, C part. Compound X, Y, and Z are shown. They have the same molecular formula. If their molecular formula are same and they are as shown that they have a different structure, so it means these are isomers. So C, that is an ester, that is carboxylic acid, and again we have a ester. ये आइडेंटिफिकेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए. जी ये आइडेंटिफिकेशन सबको पता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें. No, sir. Okay. Deduce the molecular formula of X, Y, and Z. If we look, how many carbon atoms are there? There are 3 carbon atoms. If you count for a hydrogen, for example, if I take it from Z, we have a 2 terminal carbon atoms, which means that both have a 3 hydrogens. So total hydrogens are 6. And on the center carbon atom, there are 4 bonds are shown in the skeletal formula, which means that no hydrogen is bonded to that one. And we have a 2 oxygens. So this is the molecular formula of X, Y, and Z. Is this clear? Yes. Okay. In 3 experiments, sodium is added to separate samples of X, Y, and Z. Okay. Sodium is a metal. Complete the table to show the observation for each of these 3 experiments. Ignore any temperature change which may occur. Okay. So sodium is a metal. So it either react with a carboxylic acid or alcohol. And if we look at X, Y, and Z, as we identified, only Y is a carboxylic acid, X and Z are ester, right? So if X and Z are ester, so we can write over here no reaction, and here as well no reaction. You have to write the observation of the reaction taking place. So when a metal reacts with an acid, a salt and a hydrogen gas will form, and whenever the hydrogen gas is formed in the acid, we will observe effervescence. So the answer will be for a sodium metal with a Y is effervescence. जी ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Now, sodium carbonate solution reacts with a methanoic acid.
So C, a metal carbonate and an acid. So remember, whenever a metal carbonate and acid reacts, the products are salt, carbon dioxide, and water. So methanoic acid means a carboxylic acid containing one carbon. So the formula will be HCO2H. And sodium is in group 1, it have a +1 charge, and carbonate have a 2 negative charge. So the formula will be Na2CO3. When these two react, the hydrogen that is bonded to COOH group will be displaced by Na. Along with that, what we will get? Water and carbon dioxide. So there are two Na, which means I have to put 2 over here and I have to put 2 over here. Now the equation is balanced. You can easily check. If anybody have any doubt, kindly ask. जी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So here we have completed the May June 22 of year 19 to 2019, and I have shared you the paper of October November 2019. तो हम यहाँ से अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर स्टार्ट करेंगे अभी. Okay. Let's start. In the periodic table, the p block contain elements whose outer electrons are found in p subshell. Elements in the p block show a general increase in first ionization energy as the atomic number increases. Draw the shape of a p orbital. They have asked you to draw the shape of a p orbital. So you just need to draw two equal lobes like this. They must be equal. Okay. Is this clear? Yes. Write an Yes, equation to show the first ionization energy of silicon. So whenever we write the equation for the ionization energy, remember that the substance must be in its gaseous state. So I will write 1 mole of silicon in a gaseous state, forming 1 mole of a silicon with a 1+ charge in a gaseous state and 1 electron. Is this clear? yes, Explain why there is a general increase in first ionization energies of the elements across period 3. So they have given you the trend, they have stated the trend, and they ask you the reason. So we can say that it is because across period 3, the
nuclear charge increases or the atomic number increases, both are same thing. Nuclear charge means the charge in the nucleus, and in nucleus only proton have a charge. So the nuclear charge increases while it's a third period. So all the elements have a third shell as their valence shell. So there is a no change in shell, which means that the shielding effect remains same. Shielding effect increases with the increase in the shell. So the shell is same, which means shielding effect remains same. Hence, forces of attraction between nucleus and valence electron increases. Is this clear? Yes. Yes, sir. Element A is in the P block. The graph shows the successive ionization energies for the removal of the first 10 electrons of A. State and explain the group of the periodic table that element A belongs to. Yes, can anybody predict the group of the element A, that in which group it is present? If you look at the graph, you can easily identify. Sir, fourth group. Sorry? Sir, fourth group. No, not fourth group. It is the Third. third group. Yeah, because the fourth electron, the difference between the third and the fourth electron is, greater, which means the outermost shell or the valence shell have a 3 electrons, and if it have a 3 electron, then it means that it is belong to group 3, or we can also write it's in group 13, क्योंकि 3 को group 13 भी कहा जाता है, periodic table में 13 mention होता है. ठीक है? And then you have to write the explanation. So we can say that there is a large difference in 1 minute. So there is a large difference in third and fourth ionization energy. Is this understandable to everyone? Yes, sir. Sir, Okay. 12 o'clock the class है. Yes. सर Yes. सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें तो ग्राफ गिवन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में इजी आइडेंटिफाई करना कि बिग गैप किस में आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन जो टेबल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वैल्यूज गिवन होती हैं उनको कैसे करते हैं? उनको भी आप ऐसे ही करेंगे. ये देखें, 1 मिनट मैं आपको शो कर देता हूँ. सर आपने ये नोट शेयर किए हैं?
नहीं, ये नोट्स एक्चुअली मैंने प्रीवियस नोट्स शेयर किए, ये इस सेशन के अभी सिर्फ जो चैप्टर्स हुए हैं, अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ये उसी के हैं। तो अभी हमने सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कंप्लीट किया है, तो उसके ही नोट्स हैं। सर तो मेरे बाकी पास उसके नोट्स हैं, नोट्स नहीं है वैसे, मेरे पास लेक्चर्स और वो टॉपिकल जैसे। एक मिनट, आपके पास लेक्चर्स और सिर्फ टॉपिकल्स हैं? आप अपना ईमेल मुझे जरा दोबारा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। अच्छा, अब ये देखें, आपके ने ये वाला पूछा था कि इस फॉर्म में हमें कैसे पता चलेगा। यस सर। अब देखें, आप डिफरेंस देखती जाएं, आप सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर हम सब्ट्रैक्ट नहीं भी करते तो अगर हम रफली वर्कआउट करें तो देखें, यहाँ पे 900 का डिफरेंस है, राइट? यहाँ पे अराउंड 1000 का डिफरेंस है, हो सकता है 1000 से कम का ही हो, मैं रफली देख रहा हूँ। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 2000 का है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 3000 का है। और यहाँ पे देखें कितना डिफरेंस है? अराउंड 14000 का है, राइट? जी। तो इसका मतलब है कि ये आपका पहला शेल है। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं ये फर्स्ट शेल से हुए हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी, आउटर मोस्ट शेल से रिमूव हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप 5 में होगा। ठीक है सर। तो हम इस तरह डिफरेंस देख के, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस में मिलेगा तो हम उस पे जो है उसकी बेसिस पे आंसर देंगे। ओके। सर जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस हो रहा है वो नेक्स्ट शेल में है। हाँ, जिसके बाद हमें ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है वो बाद वाला नेक्स्ट शेल में है, और पहला वाला जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, उससे ओके पहले सर। वाला। ओके। नाउ, silicon is found in many compounds in the earth's crust. Silicon has a 3 naturally occurring isotopes, silicon 28, 29, 30. The table shows the data. Okay. A sample of silicon contains 92.2% of silicon. The total percentage abundance of silicon 29 and silicon 30 is 7.8%. तो उन्होंने आपको silicon 29 और silicon 30 की collective abundance बता दी है। The relative atomic mass of silicon is 28.09. Calculate the percentage abundance of silicon 30. और silicon 30 की आपको percentage abundance calculate करनी है। जी, कैसे करेंगे? अच्छा देखें, इसके लिए आप एक काम कर लें, हमें दो का सम दिया है ना, दो की परसेंटेज अबंडेंसेस का। अगर हम ये अज्यूम कर लें पहले वर्क करने से पहले कि सिलिकॉन 29 की परसेंटेज अबंडेंस क्या है? x है। और सिलिकॉन 30 की परसेंटेज अबंडेंस देन क्या होगी? 7.8 माइनस x होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सिलिकॉन 29 और सिलिकॉन 30 की परसेंटेज अबंडेंसेस का सम 7.8 है। दोनों का टोटल 7.8 है, तो अगर मैं एक को x अज्यूम करूंगा तो दूसरे की 7.8 माइनस x होगी। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें क्या प्रोवाइड किया गया है? 28.09 इज इक्वल्स टू
isotopic mass of silicon 28 is 28 times its percentage abundance जो क्या है 9.2% है plus the isotopic mass of the second isotope that is 29 and its percentage abundance is x, then the isotopic mass of the third isotope that is 30 times its percentage abundance is 7.8 minus x and divided by 100. ये बात क्लियर है सबको? ये मैंने एक्सप्रेशन बनाई है, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ये क्लियर है इक्वेशन सबको? सर फिर से समझाते हैं। जी देखें, ये स्टेटमेंट पढ़ें, ये वाली। जी तो इसकी बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं ना कि सिलिकॉन 29 की परसेंटेज अबंडेंस और सिलिकॉन 30 की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? 7.8% है, राइट? यस। तो अगर मैं सिलिकॉन 29 की परसेंटेज अबंडेंस को x अज्यूम करता हूं तो सिलिकॉन 30 की परसेंटेज अबंडेंस को 7.8 माइनस x अज्यूम करूंगा, क्योंकि दोनों का सम 7.8 के इक्वल है। और सर इसको ऑपोजिट कर सकते हैं, हाँ, सिलिकॉन opposite भी माइनस कर एक्स, सकते हैं। और ठीक है सर। बिल्कुल 29 को 7.8 माइनस x कर दें और 30 को x ले लें, इस तरह भी किया जा सकता है। और बाकी तो मेथड वही है ना कि आइसोटोपिक मास को हम उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज से कर देते हैं। ठीक यस है, सर। ओके। तो अगर मैं 100 को उधर मूव कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 2809। 28 को 92.2 में ऐड करें, क्या आ रहा है आंसर? Two 581.6. सॉरी, कैन यू रिपीट? 2581.6. 2581.6 प्लस 29x और 30 को 7.8 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है? 234. 234 and minus 30x, right? तो अगर मैं x को सब्जेक्ट बना दूं, अब देखें 29x और माइनस 30x है तो माइनस x बचेगा, मैं x को इज इक्वल्स टू के अपोजिट ले जाऊं तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी? 258.1.6 प्लस 234 माइनस 2809, राइट? सॉल्व कर लें, क्या आ रही है x की वैल्यू? 6.6. x इज इक्वल्स टू 6.6, यानी कि ये मुझे परसेंटेज किसकी मिल गई? सिलिकॉन 29 की परसेंटेज मिल गई। तो सिलिकॉन 30 की परसेंटेज क्या होगी, जो कि हमने ऊपर डिसाइड की थी 7.8 माइनस x एंड x इज 6.6, तो क्या आंसर आएगा? 1.2। Yes. जी, ये क्लियर है सबको? यस सर। Okay, now silicon reacts with a nitrogen gas to form Si3N4.
Si3N4 is a solid with a melting point of 1900 degrees Celsius. It is insoluble in water and does not conduct electricity when molten. Suggest the type of bonding and structure. Explain your answer. Can anybody tell me the answer? So if it is not conducting electricity, Not ionic. not ionic, and there are two elements in there, then it means that it must have a covalent bond, but a high melting point, which suggests that its structure is giant molecular, not a simple molecular. Is this understandable to everyone? Yes. And if it Yes, does not sir. conduct electricity, for that we can say no free moving ions or electrons. Otherwise, if it have a free moving ions or electrons, it can conduct electricity. जी यहाँ तक clear है सबको? Yes, sir. Okay. Sulfur containing compounds such as C2H5SH are found in fossil fuels and produce SO2 when they are burned. Write an equation to show the complete combustion of C2H5SH. अब देखें सल्फर के लिए उन्होंने आपको प्रोडक्ट बता दी क्या फॉर्म होगी. सल्फर जब कंबस्ट होगा तो SO2 गैस फॉर्म होगी. अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन जब कंप्लीट कंबस्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो यहाँ मैं O2 कार्बन डाइऑक्साइड plus water plus SO2. Now balance the equation. We have a 2 carbon, so I will put no. We have a 2 carbon on the left side, so I will put 2 over here. We have a 6 hydrogens, so I will put 3 over here. And we have a 1 sulfur. Now if you count for the oxygen, 4 oxygens are there, 3 oxygens are here, and 2 oxygen are here. So the sum of the number of oxygen atoms on the product side is 9, and on the reactant side we have only 2 oxygen. So I will make a coefficient 9/2 for O2 to make it the 9. जी ये बैलेंसिंग क्लियर है सबको? Yes. Yes. Okay. Then state why the presence of SO2 in the atmosphere has environmental consequence. Describe one consequence of the environment. So it causes acid rain. Okay. So, but it's of 2 marks. So we will further write the consequence of acid rain as well. It causes acid rain, which erodes the building or which lowers the pH of soil. Is this clear to everyone? Yes. Okay. Just I am completing this question from question number 2. We will start in the next class.
SO2 can react with ozone to form sulfur trioxide in two different reactions. In one reaction, SO2 reacts with ozone until a dynamic equilibrium is established. Okay. State and explain the effect on increase in pressure on the composition of equilibrium mixture. So when we increase the pressure, in which direction equilibrium shift? Where there are less number of moles of gases. Very good, where there are less number of moles of gases. But if you look over here, we have a 2 moles of gases on the reactant side and 2 moles of gases on the product side, which means equilibrium does not shift in any direction, right? So we can write that there will be no effect of increasing pressure as the number of moles of gases are equal on both sides. Is this clear? Yes. sir. Okay. Now, in the other reaction, a different equilibrium is established at 300 Kelvin as shown. Okay. Suggest a temperature needed to increase the yield of SO3 at equilibrium. So, yes, can anybody tell me whether we need to raise the temperature or lower down the temperature? Increase the temperature. Why? Because increasing the temperature will shift the equilibrium towards the endothermic side, and here the forward reaction is endothermic. Okay, very good. The forward reaction is endothermic. When we increase the temperature, equilibrium shifts to the endothermic side only. So we can say that the forward reaction is endothermic. So, and they ask you to suggest a temperature. So, any temperature higher than 300 K will increase the yield of sulfur trioxide. Yes, is this clear? Yes. Okay. So we have completed the question number 1. Now from question number 2 onwards, we will do in the class tomorrow. And tomorrow we will start at 11 o'clock, same time, inshallah. Okay. Okay. Okay, then take care, everyone. Allah Hafiz.